Hey, so I'm a huge fan of Shraddha Kapoor. I just love her. And jab she uploaded her first reel and the look she shared with us, I fell in love. And I thought I'm going to try this. So मैंने अपने palette में देखा, I realized, okay, I have some colors, maybe I can do something. I can try to recreate this look. And then I was on it. सो अगर आप यहाँ हैं टू रिक्रिएट दिस एग्जैक्ट लुक देन आई विल टेल यू दिस मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड आई डोंट नो इफ़ आई वॉज एबल टू क्रिएट दिस एग्जैक्ट लुक और नॉट बट अगर आपको देखना है कि एक्सपेरिमेंट कैसा रहा देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग सो एट दिस पॉइंट इन द वीडियो मैं यूज़ कर रही हूँ NYB ऑरेंज करेक्टर टू हाइड अवे माई डार्क सर्कल्स मेरे फिट मी फाउंडेशन के साथ. So here I realized I'm also inspired by the makeup on this beautiful lady. I can try it sometime in future. Then I'm taking a brown shade to bronze my face. Okay, it's time to play up my eyes. I'm nervous. So सबसे पहले I'm taking a black shade और apply कर रही हूँ on the corners क्योंकि I felt कि श्रद्धा के look में जो silver shade था around the corners it was little dark. Maybe I was hallucinating or something, who knows. But I chose to do this. And इस point पे मुझे idea बिल्कुल नहीं था if this was gonna be helpful or not. इसकी ज़रूरत थी भी या नहीं. उसके बाद मैं हल्का सा फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ टू हाईलाइट द मिडल पार्ट. उसके बाद मैं यहाँ ग्रे शेड ले रही हूँ और मैं इसे अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माई लिड्स और मैं इसे थोड़ा सा बिलो लोअर लैश लाइन पे भी एक्सटेंड करूँगी. यू विल सी. इसके बाद मैं Elle 18 काजल ले रही हूँ थिक लाइनिंग के लिए. एंड देन मैं ब्लैक एंड ग्रे शेड्स को मिक्स कर रही हूँ विथ माई ब्रश काजल लाइनिंग को स्मज करने के लिए. दिस मे टेक अ वाइल. उसके बाद मैं ब्लैक शेड लूँगी टू डार्कन माई आउटर कॉर्नर्स. और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रे शेड अपने लिड्स पे फिर से बिकॉज स्मजिंग के बाद कलर थोड़ा सा डल हो गया था. एंड इन द लास्ट स्टेप मैं फिर से ब्लैक शेड से एक स्मोक्ड विंग्ड आईलाइनर इफेक्ट दूंगी अपने आईज को. I think I did a pretty good job. उसके बाद I'm
highlighting my under eyes. So what do you think? Did I do a good job or not? Let me know in the comments. Anyway, so I'm using Lakme Iconic Mascara to exaggerate my lashes and complete the whole look. उसके बाद आई एम यूजिंग रेवलॉन लिपस्टिक एज लिपस्टिक एंड ब्लश. इट्स ऑरेंज. मेरे पास एग्जैक्ट शेड नहीं था, बट एनीवे आई पेयर्ड दिस लुक विद दिस वन. एंड देन मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी शिमर ब्रिक 02. So that's it. I hope you enjoyed the video. Okay, Shraddha Kapoor makeup or not, I loved how it turned out. And अगर आपको भी ये पसंद आया then please hit a like. And I will see you in my next video. Until then, toodles. Bye.